our YouTube channel Pickle Jar. फ्रेंड्स, जब भी बात आती है मिठाई खरीदने की, अक्सर हम उन शॉप्स पे जाते हैं जो या तो हमारे घर से पास होती है या हमारे एरिया की, हमारे मोहल्ले की ऐसी कोई शॉप जो सालों साल से वहाँ पर है और हमें पता है कि हाँ, ये पर्टिकुलर स्वीट है जो यहाँ मिलेगी और अच्छी क्वालिटी में मिलेगी. बट when it comes to going to a new shop altogether, sometimes we are bit in a fix कि पता नहीं वहाँ पर क्वालिटी ऑफ स्वीट क्या होगा, हाइजीन लेवल क्या होगा, उसकी क्या स्पेशलिटी होगी. And probably friends, there are many such questions, but friends, probably that is what we are here for. While heading our way to studio, we came across a complete new shop altogether which was not here like a month back. Friends, we are talking about Shagun Sweets. As soon as we came to know about this shop, without making any further delay, we thought of heading to it to know more about this shop. So friends, let's go. So let's see. Excellent. Like traditionally we can see this complete section is dedicated to Kaju sweets, starting from Kaju Katli, Kaju Kalingad which is in the shape of watermelon, Kaju slice, dry fruit barfi, again two different flavors of Kaju, Kaju apple which is again in the shape of apple, and Kaju strawberry. Okay, this is something really looking awesome. Keshar Katli and Gulab Ladu. Gulab Ladu, probably this is first time I am seeing this combination, Gulab Ladu. I have seen Gulab Katri, Gulkan probably. Let us see. I'll come back to you. Gulab Ladu. Okay, this is a barfi section. Malai barfi, mango barfi, Anjir Malai barfi. Friends, it's evening, almost evening time, but these all things are looking so fresh as if they have been brought just now. It's really giving a quite refreshing look. Sangam roll, chocolate roll. This entire section is dedicated to barfi, as I said. Kalakan का जो texture है brownish and creamish, really looking at awesome feel. Okay, one of my favorite section is peda section. They have got a huge range of pedas, special malai peda to kandi peda, almost 8 to 10 different types of pedas I can see. And the one thing I must say here that the symmetry of each and every पेड़ा, हर पेड़े का एक ही शेप है. भैया हाथ से बनाते हैं या हाथ से ही बना. फ्रेंड्स, नेवर हैव आई एवर सीन एनी हैंडमेड पेड़ास विथ सो मच सिमेट्री. ओके, ऑसम. दिस इज द साखर जामुन. ओके, डिफरेंट वेराइटीज जामुन ऑल्सो, काला जामुन, gulab jamun. Okay, now what is this? This is a separate section dedicated to laddu. Okay, this is interesting. Friends, I have made so many videos in past, but never have I seen so many varieties of laddus under one roof. This is interesting. Friends, let's see. Dink laddu. Yes, गोंद के लड्डू जिसे कहते हैं, जो बहुत पौष्टिक और बहुत ताकतवर रहते हैं. अगेन अनदर वैरायटी ऑफ डिंक लाडू. ये थोड़ा बारीक है, यह थोड़ा सा मोटा है. गुलकन शेंगदाने. शेंगदाने मतलब अपना पीनट्स हैं. गुलकन मतलब गुलाब वाला. तो गुलाब और पीनट्स का ये कॉम्बिनेशन भी मैंने नहीं देखा. क्वाइट इंटरेस्टिंग आई मस्ट से. मूंग लड्डू आई नो. शेंगदाने यानी अगेन दाने के लड्डू. बेसन लड्डू ट्रेडिशनल. पौष्टिक लड्डू, probably ragi or some different. We will just get this information from the owner, like what exactly is the ingredients of these. मेथी लाडू थोड़ा सा कड़वा रहता है फ्रेंड्स, लेकिन nothing is better than this when you are having this some kind of joint pains, or especially in the winter season. If people have any kind of joint pain or anything, then methi laddu is a must. Motichur laddu, our traditional festival ones. Besan laddu, rava laddu, and khajur laddu. फ्रेंड्स, दिस इज़ अगेन इंटरेस्टिंग बिकॉज नेवर हैव आई सीन. खजूर लाडू मैंने पहले न कभी देखा है न कभी ट्राई किया है. आई थिंक आई मस्ट ट्राई दिस यार. फ्रेंड्स, आई मस्ट से कि इफ़ यू आर फॉन्ड ऑफ ईटिंग लड्डू, देन दिस इज़ वन शॉप दैट यू मस्ट विजिट. दोस्तों, इतनी सारी मिठाइयाँ देखने के बाद हमारे ऑलराइट फ्रेंड्स,
So alright friends, it's review time. So as been recommended to us, we have Khajur Laddu or Arabian seedless